हाय फ्रेंड्स, ये 10,000 MCQ सीरीज़ का पार्ट 11 है। सोशोलॉजी का ये 10,000 MCQ सीरीज़ आपको सोशोलॉजी NTA UGC NET या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PG एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये पार्ट 11 क्वेश्चन नंबर 501 से क्वेश्चन नंबर 550 तक। चलिए शुरू करते हैं। Question number 501. Dash is critique of extreme form of cultural relativism. A. Contextual rationality. B. Ethnocentrism. C. Ethical absolutism. D. Cultural lag. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, एथिकल एब्सोल्यूटिज्म। Question number 502. The concept of cultural lag given by cultural lag का concept किसने दिया? A. Sumner, B. Ralph Linton, C. W. Ogburn, D. Oscar Lewis। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑगबर्न ने दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग। क्वेश्चन नंबर 503. Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A. Material culture changes faster than non-material. B. Non-material part changes faster than material part. C. Both remain at the same pace. D. None of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेटेरियल कल्चर चेंजेस फास्टर देन नॉन मेटेरियल कल्चर। इसके वजह से देखने को मिलता है कल्चरल लैग, जिसके बारे में अकबर ने बोला है। मेटेरियल कल्चर ज़्यादा स्पीड से चेंज होता है, तो नॉन मेटेरियल कल्चर इतना स्पीड में चेंज नहीं होता है। इसके वजह से उन मेटेरियल नॉन मेटेरियल के बीच में गैप रह जाता है, वही गैप है कल्चरल लैग। Question number 504. More rapid is the change in culture, this is the cultural lag. कल्चर में चेंज मोर रैपिड होगा तो कल्चरल लैग क्या होगा? ए. लेसर, बी. ग्रेटर, सी. सेम, डी. नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेटर। मोर रैपिड द चेंज इन कल्चर और ग्रेटर इज द कल्चरल लैग। Question number 505. According to this, culture is symbolic. किसने कहा कि culture is symbolic? A. Spencer, B. Leslie White, C. Oscar Lewis, D. Ralph Linton। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेस्ली व्हाइट। According to Leslie White, culture is symbolic. Question number 506. Chronic poverty gives rise to। क्रोनिक पॉवर्टी किसे इंक्रीज हो जाए? क्रोनिक पॉवर्टी के वजह से किसका इंक्रीज होता है? ए. इंटेंस ग्रेटिफिकेशन, बी. लॉन्ग रेंज फर्टिलिज्म, सी. बोथ ए एंड बी, डी. नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 507. One's sudden exposure to different culture leads to personality disorganization. This is known as। किसी दूसरे कल्चर को सडन एक्सपोजर के वजह से पर्सनालिटी में डिसऑर्गेनाइजेशन होने लगता है, तो इसको क्या कहेंगे? ए. कल्चरल डोप, बी. कल्चरल पॉवर्टी, सी. कल्चरल शॉक, डी. कल्चरल डिप्रेवेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कल्चरल शॉक। One's sudden exposure to different culture leads to personality disorganization. This is known as cultural lag. Question number 508. When society is having different cultures come into intensive, direct, mediated contact with subsequent major changes
in original culture of one of the two societies. The cultural process involved in दो डिफरेंट कल्चर कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन एक कल्चर में, जो एक कल्चर का ओरिजिनल कल्चर में चेंज होने लगता है, एक सोसाइटी का ओरिजिनल कल्चर में चेंज होने लगता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ए डिफ्यूजन, बी ट्रांसकल्चरेशन, सी एनकल्चरेशन, डी एक्वल्चरेशन। इसका करेक्ट आंसर है एक्वल्चरेशन। Question number 509. The exchange of cultural patterns between two groups is termed. The exchange of cultural patterns between two groups is termed A. Enculturation, C. Acculturation, B. Acculturation, C. Transculturation, D. Diffusion. इसका correct answer है option C. Transculturation. The exchange of cultural patterns between two groups is termed transculturation. Question number 510. The strain that exists between two correlated parts of culture that change at unequal rates of speed may be interpreted as a lag in the part that is changing at the slower rate for the one lags behind the other. This statement can be attributed to. ये है जो मेटेरियल कल्चर ज़्यादा फास्ट चेंज होता है और नॉन मेटेरियल कल्चर इतना फास्ट चेंज नहीं होता है, तभी उन दोनों के बीच लैग दिखाई देता है। तो ये जो स्टेटमेंट किसने दिया है? ए मैकाइवर, बी अकबर्न, सी जाविस, डी पेज। इसका करेक्ट आंसर है अकबर्न। अकबर्न ने जो कहा है कल्चर लैग के बारे में, तो कल्चरल लैग के बारे में ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 511. Similar solutions come out of similar problems. It is known as. Similar solutions come out of similar problems. It is known as. समान समाधान निकलेगी समान प्रॉब्लम से, इसको क्या कहेंगे? ए कल्चरल डोप, बी कल्चरल पैरेलल्स, सी कल्चरल कैपिटल, डी कल्चरल ड्रिफ्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कल्चरल पैरेलल्स। दूसरा टर्म यूज होता है ये साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। जो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के वजह से क्या होता है, डिफरेंट सोसाइटी में सेम प्रॉब्लम के लिए सिमिलर सॉल्यूशन, सिमिलर प्रॉब्लम के लिए सिमिलर सॉल्यूशन मतलब अराइज होके आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कल्चरल पैरेलल्स। क्वेश्चन नंबर 512. Assertion है, according to Malinowski, all culture traits were interrelated. Reason, a culture trait had meaning only in the context of the whole. Course है, A both A and R are true and R is the correct explanation of A. B both A and B are true but R is not the correct explanation of A. C A is true but R is false. D A is false but R is true. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. According to Malinowski, all culture traits were interrelated. है ना, सारी कल्चर ट्रेट्स जो है वो इंटररिलेटेड है। रीजन, ए कल्चर ट्रेट हैड मीनिंग ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही कल्चर ट्रेट का मीनिंग रहता है। क्वेश्चन नंबर 513. Assertion है, Malinowski regarded a culture as self-sufficient and holistic. Reason, culture traits are interrelated and change in any one will affect the whole. Quote say both A and R are true and R is the correct explanation of A. B both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C A is true but R is false. D A is false but R is true. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 514. Assertion है, conflict is the part of the social process. Conflict is the part of the social
प्रोसेस, सोशल प्रोसेस का कॉन्फ्लिक्ट एक पार्ट है. रीजन, इट एम्स टू हार्मोनाइज डिफरेंसेस, is an instrument of change and leads to social order. ये डिफरेंसेस को हार्मोनाइज करता है. ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है, इसके वजह से चेंज आता है और सोशल ऑर्डर भी मेंटेन होता है. कोर्स है ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Question number 515. Assertion है, festivals like Holi and Id are always a source of social strife. Reason, they have the potential of promoting communal harmony if celebrated jointly. Quotes, B, A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका correct answer है option B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Question number 516. Assertion है, culture is of natural growth. Reason, it cannot be transplanted wholly. A, quote say A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false and R is true. इसका correct answer है option D. A is false but R is true. Question number 517. Assertion, the earliest form of marriage was promiscuity. Reason, man was savage. Assertion, the earliest form of marriage was promiscuity. Reason, man was savage. Course है, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका correct answer है A is false but R is true. Question number 518. Assertion है, modified evolution holds human progress to be marked along a parabolic curve. Reason, change was not in a linear upward form but through periodic reverses. Course है, A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका correct answer है option C, A is true but R is false. Question number 519. Assertion है, an island is likely to remain culturally isolated. Reason, oceans prove a barrier to cultural diffusion. Course है, A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका correct answer है option D. A is false but R is true. Question number 520. Cultural relativism. Cultural relativism stresses the significance of A, individual cultural traits. B, cultural complexes. C, social institutions. D, the ethos of the cultural and social system. Cultural relativism किसका significance को stress करता है? इसका correct answer है option D. Cultural relativism stresses the significance of the ethos of the cultural and social system. Question number 521. Cultural relativism refers to the coexistence of cultural groups. Options है, A, with relative affinities. B, with sharp differences. C, with some similarities. D, with some differences. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
Cultural relativism refers to the coexistence of culture groups with relative affinities. Question number 522. Cultural relativism would be difficult in societies dominated by. किस सोसाइटी में ये जो कल्चरल रिलेटिविज्म आना डिफिकल्ट है? कल्चरल रिलेटिविज्म विल बी डिफिकल्ट इन सोसाइटीज डोमिनेटेड बाय ए पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी, बी मोनार्की, सी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, डी कम्युनिज्म. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म. कल्चरल relativism would be difficult in societies dominated by religious fundamentalism. Question number 523. Cultural relativism is yielding to acculturation because of. Cultural relativism is yielding to acculturation because of A. Vote politics, B. Scientific education, C. National interest, D. All the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑल द अबव. कल्चरल रिलेटिविज्म इज yielding to acculturation because of vote politics, scientific education and national interest. Question number 524. Cultural relativism does not imply that. Cultural relativism does not imply that. Does not imply that a culture may be good or bad, B. it is bound to the place, C. it is bound to its antecedents, D. prejudices towards a group form a part of it. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट इज बाउंड टू द प्लेस. Cultural relativism does not imply that it is bound to the place. Question number 525. Cultural relativism does not mean. Cultural relativism does not mean A. that a value judgment is placed on a culture, B. that a culture is bound to its antecedents, C. prejudices form a part of it, D. it is bound to its local. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए. Cultural relativism does not mean that a value judgment is placed on a culture. Question number 526. A culture group that has relinquished some of its traditions and partially accepted the values and ways of another culture is called A. genetic group, B. vertical group, C. horizontal group, डी मार्जिनल ग्रुप. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मार्जिनल ग्रुप. ए कल्चर ग्रुप that has relinquished some of its traditions and partially accepted the values and ways of another culture is called marginal group. Question number 527. Subcultures bring about differences in personality within a. Subcultures bring about differences in personality within a. A. group, B. family, C. society, D. community. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. Subcultures bring about differences in personality within a society. Question number 528. In Indian culture, Purushartha refers to days of life. Purushartha क्या है? A. stages, B. purposes, C. unity, D. aims. The Indian culture, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. In Indian culture, Purushartha refers to aims of life. Question number 529. Consider the following statements. Assertion है the Varna Jati complex facilitated the process of acculturation. Reason, the immigrant groups could easily carve out a niche for
themselves in the socio-economic milieu. Of these statements, A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका correct answer है option A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Question number 530. Consider the following statements. Assertion है, complete acculturation may not be possible, but there are fresh stimulants to acculturation. Reason, science and material prosperity do not permit cultural islands to exist. Of this statement, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका correct answer है option A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Question number 531. Of the following, who is the most articulate contemporary exponent of the philosophy of cultural relativism? तो इनमें से कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में ज़्यादा कौन बोले हैं? ए, सी जी कोले, बी आर के मॉर्टन, सी जी एच स्मिथ, डी बी मालिनोस्की. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मालिनोस्की. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ये मालिनोस्की कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में ज़्यादा कुछ बोले हैं. क्वेश्चन नंबर 532. Dash is the unit of geographic space in which similar culture or cultures are found. Dash is a unit of geographic space in which similar culture or cultures are found. This is simply a mode of the spatial classification of culture. A, culture complex. B, culture area. C, culture pattern. D, subculture. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है culture area. Culture area is a unit of geographic space in which similar cultures are found. This is simply a mode of the spatial classification of culture. Question number 533. Underlying cultural relativism is the principle of. Underlying cultural relativism is the principle of A, contextualism. B, universalism. C, cultural convergence. D, cultural parallelism. इसका करेक्ट आंसर है A, contextualism. Underlying cultural relativism is the principle of contextualism. Question number 534. When culture is taken to mean the way of life, it is obvious that within this whole there are elements like say prayer, rituals and so on. Each of these elements is called A, culture trait. B, institution. C, subculture. D, culture complex. इसका करेक्ट आंसर है कल्चर ट्रेट. ऑप्शन ए, कल्चर ट्रेट. क्वेश्चन नंबर 535. Which theory is based on the psychic unity of mankind? Which theory is based on the psychic unity of mankind? A, evolutionism. B, diffusionism. C, functionalism. D, न्यू डिफ्यूजनिज्म. इसका करेक्ट आंसर है evolutionism. Evolutionism theory is based on the psychic unity of mind, psychic unity of mankind. Question number 536. What is meant by the psychic unity of mankind? What is meant by the psychic unity of mankind? A, all men are psychologically united. B, all men think in the same way.
C. Given the same problems, men would think out similar solutions. D. All human beings are social. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी. गिवन द सेम प्रॉब्लम्स men would think out similar solutions. ये है psychic unity of mankind. Question number 537. Tendency of a person to reject the culture of his own group is called A. Egocentrism, B. Jingoism, C. Relativism, D. Ethnocentrism. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, Ethnocentrism. Question number 538. The view that judges everything in the context of one's own group is called. The view that judges everything in the context of one's own group. खुद के ग्रुप के हिसाब से हम दूसरे ग्रुप को देखेंगे, दूसरे किसी कल्चर या ग्रुप को हम देखेंगे, इसको क्या कहेंगे? ए. रेशियलिज्म, बी. इग्विटिज्म, सी. एथनोसेंट्रिज्म, डी. इंडिविजुअलिज्म. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, एथनोसेंट्रिज्म. द व्यू दैट judges everything in the context of one's own group is called ethnocentrism. Question number 539. Ethnocentrism is A. Attitude, B. Way of life, C. Commitment to one's in group, D. All the above. इसका करेक्ट आंसर है all the above. Question number 540. There are some recognizable universals that apply to all cultures. Which of the following is not one of the recognizable universals? A. Ethnocentrism, B. incest, C. family, D. monogamy. इसका करेक्ट आंसर है A. ethnocentrism. Question number 541. Every cultural trait has meaning and legitimacy within its own cultural context. Which of the following relates to this statement? Every cultural trait has meaning and legitimacy within its own cultural context. इसे हम क्या कहते हैं? A. acculturation, B. ethical absolutism, C. cultural relativism, D. culturalization. ये है ऑप्शन सी, cultural relativism. Every cultural trait has meaning and legitimacy within its own cultural context. ये जो है ये है cultural relativism का व्यू. क्वेश्चन नंबर 542. 541 गया, 542. Who introduced the term ethnocentrism? ये जो टर्म एथनोसेंट्रिज्म है किसने इंट्रोड्यूस किया? ए. विलियम जी समनर, बी. एफ.एस. गिडिंग्स, सी. सी.एच. कोले, डी. इमाइल दुर्खेम. इसका करेक्ट आंसर है विलियम जी समनर. क्वेश्चन नंबर 543. एथनोसेंट्रिज्म encourages admiration of behavior. Ethnocentrism encourages admiration of behavior A. within in groups, B. in the out groups, C. in both in group and out group, D. none of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. Ethnocentrism encourages admiration of behavior within in groups. Question number 544. Ethnocentrism exists most of all because of. Ethnocentrism exists most of all because of A. human nature, B. socialization, C. man's selfishness, D. human instinct. किसके वजह से एथनोसेंट्रिज्म एग्जिस्ट करता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन के
वजह से। एथनोसेंट्रिज्म एग्जिस्ट मोस्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ सोशलाइजेशन। 545 ethnocentrism is A. altogether advantageous, B. altogether disadvantageous, C. advantageous and disadvantageous, D. none of the above। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एथनोसेंट्रिज्म है सॉलिडरिटी डेवलप होता है इन ग्रुप में, हॉस्टिलिटी डेवलप होता है टुवर्ड्स अदर ग्रुप में, है ना। तो एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। क्वेश्चन नंबर 546, the term ethnocentrism is derived from two Greek words, ethnos meaning dash and centron meaning center। ये जो ethnos का मीनिंग क्या है, ग्रीक वर्ड ethnos, उसका मीनिंग क्या है? A. माइंड, B. नेशन, C. कम्युनिटी, D. रेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेशन। एथनोस का मीनिंग है नेशन। क्वेश्चन नंबर 547, द barefoot Costa Rican coffee worker riddled with intestinal parasites and weighed down by poverty is proud of being a Costa Rican because he has been taught that his country is the most advanced in Central America. This is an example of A. racism, B. cultural relativity, C. communalism, D. ethnocentrism। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एथनोसेंट्रिज्म। कोस्टा रिकन कॉफी वर्कर है, तो वो पॉवर्टी में है, फिर भी उनको ये सोशलाइजेशन के जरिए बताया गया है कि वो सबसे एडवांस्ड कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में। तो इस टाइप का जो थॉट है या एग्जाम्पल है, ये है एथनोसेंट्रिज्म का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 548, एथनोसेंट्रिज्म A is mostly functional, B is always dysfunctional, C is mostly functional, D can be either functional or dysfunctional on the specific context। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ethnocentrism can be either functional or dysfunctional on the specific context। इन ग्रुप में सॉलिडरिटी डेवलप होता है, वी फीलिंग डेवलप होता है, या वी आर द बेस्ट, ये टाइप का जो थॉट डेवलप होता है, तो ग्रुप सॉलिडरिटी डेवलप होता है। और दूसरे ग्रुप के लिए हॉस्टिलिटी या दैट काइंड ऑफ थॉट डेवलप होता है, तो डिसफंक्शनल होता है। तो बोथ फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल। क्वेश्चन नंबर 549, acculturation refers to change in, acculturation refers to change in A. culture, B. social structure, C. way of life, D. polity। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, way of life। acculturation refers to change in way of life। way of life में चेंज होता है acculturation के वजह से। क्वेश्चन नंबर 550, ये पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 11 का लास्ट क्वेश्चन है। हु इज नॉट एसोसिएटेड विथ एक्culturation। इनमें से कौन एक्culturation के साथ एसोसिएटेड नहीं है? ए. हॉस्कोविज, बी. बेल्स, सी. रेडफील्ड, डी. कोले। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोले। कोले इज नॉट एसोसिएटेड विथ एक्culturation। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन किया, हर पार्ट में हम 50 क्वेश्चन करते हैं। इस पार्ट में इतना ही, हमने 550 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है अब तक। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय।